sick. Damn, that looks good. Hey guys, welcome back to the channel. Today we are just using our phone to capture the nature because whenever I have came to Malshesh Ghat ना बारिश होता है कि मेरा जो कैमरा है वो मैं ज़्यादा बाहर निकाल नहीं पाता हूँ, तो that's why I thought कि like अभी मोबाइल लेके जाते हैं because you know I am always worried about my camera, पानी चले जाएगा and all. 2-3 बार भीग भी चुका है, so that's why so we are just using our phone that is Pixel 3a. काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ़ोटोज़ आ जाते हैं इसमें से, और कॉम्पैक्ट है तो मज़ा भी आएगा, इतना ज़्यादा डर नहीं रहेगा कैमरा भीगने का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Try one composition from down. Check out over there. Looks so good. मैं सोचूंगा, ट्राई करूँगा कि वो लेक का रिफ्लेक्शन के साथ कैप्चर कर सकूँ. So let's see. Let's take one like this first. No composition, just capturing the frame. Let's try from here. Ooh, sick. Damn, that looks good. This mountain is also looking good. I guess I'll have to figure out some frames and then capture it, because अगर मैं ऐसे ही करता हूँ तो I won't be getting some good frames. Just capturing the reflection. That's all. Holy smoke. एक थोड़ा क्लाउड्स को भी कैप्चर कर लेता हूँ मैं, देन हम लोग HDR करेंगे. एक ऐसा फ्रेम भी ले लेते हैं. It's looking so good. यहाँ पर एक पॉन्ड है छोटा सा, इसमें ज़रा भी रिपल्स नहीं है. यहाँ पर कुछ हम लोग कॉम्पोजिशन ट्राई कर सकते हैं मस्त वाला एकदम. स्टिल नॉट लुकिंग गुड. ऐसा तो एकदम नॉर्मल फ्रेम आ रहा है. We'll try to capture some. हाँ great journey. There are these yellow flowers everywhere, guys. So I'll try to capture one जो ज़्यादा मस्त लगे.
यहाँ पर बहुत सारे हैं, कोई गया भी नहीं है यहाँ से। वी कैन कैप्चर वन, बट थोड़ा ग्रीनरी वाला कैप्चर करते हैं। ये वाला मत लग रहा है, मैक्रो लेंस चाहिए था अभी हम लोग को। देयर इज़ दिस ट्री टू गाइज, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक इन फ्लावर्स के साथ कैप्चर करने का। थोड़ा एडिट करना पड़ेगा हम लोग को बाकी सब ट्रीज़ रिमूव करने के लिए, बट आई थिंक इट विल कम आउट गुड। So guys, one thing I'm struggling in while capturing my photos with the phone is कि उसका brightness इतना ज़्यादा नहीं है, तो और साथ में हिस्टोग्राम भी नहीं है, so that's why पता नहीं चल रहा है कि फ़ोटोज़ बराबर से एक्सपोज आ रहे हैं या नहीं, बट इन द एडिटिंग विल सी। Guys, this is the waterfall everyone talks about। बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है और क्या फ्लो दिख रहा है पानी में ब्रो। तो यहाँ पर का भी वाटरफॉल एकदम मस्त दिख रहा है, उसका तो पानी ऐसा लग रहा है नीचे गिर रहा ही नहीं है। Check out that waterfall too guys, एकदम बहुत ही ज़्यादा एपिक लग रहा है वो तो। My God, bro, what is this?
Let's try. My God. So guys, in case you are wondering what app I am using, so I am using Lightroom Mobile, जिसके अंदर मैं प्रो मोड यूज़ कर रहा हूँ, जिसके हेल्प से आई कैन कैप्चर DNG फाइल्स, DNG मतलब रॉ फाइल्स, और साथ में आई कैन यूज़ द प्रो मोड ऑल्सो, जिसके वजह से आई कैन कंट्रोल द शटर स्पीड एंड द ISO। अपर्चर नहीं कंट्रोल कर सकता मैं, क्योंकि मेरा जो मोबाइल का लेंस है, मोस्टली सभी मोबाइल का लेंस जो रहता है वो फिक्स्ड अपर्चर वाला रहता है। एंड आई कैन ऑल्सो कंट्रोल द फोकस, जिसके वजह से मैं ईज़िली जो एकदम माइन्यूट वाला फोकस है, जैसे हमने जो फ्लावर कैप्चर किया था वो वाले टाइम पे मैंने मैनुअल फोकस यूज़ किया था। सो आई एम यूजिंग द लाइटरूम ऐप जस्ट टू यूज़ द मैनुअल मोड। आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लाइटरूम ऐप ही यूज़ करो। ओके, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, light on the mountain looking pretty fine. That's why capturing this thing. It came out good. So guys, that was it. I hope you guys like this video. Don't forget to hit that subscribe button, and I will see you guys in the next video. Peace out.